हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू क्लास 11th का चैप्टर नंबर 14 है रिस्पिरेशन इन प्लांट। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर है पायरुवेट एंड एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज slash before entering Krebs cycle pyruvate is changed to। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए एसिटाइल कोएंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज ऑप्शन नंबर ए मेजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस मेक डायरेक्ट यूज ऑफ ऑक्सीजन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in Krebs cycle, the FAD participates as electron acceptor during the conversion of। इसका आंसर है सक्सिनाइल एसिड टू फ्यूमरिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर रीजन दैट ग्लाइकोलाइसिस इज नॉट एज एनर्जी प्रोडक्टिव एज रिस्पायरेशन इज दैट। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पायरुवेट इज मोर reduced than CO2. It still contains much of the energy from glucose. Next question, which of the following is a 4-carbon compound? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the biological uncoupler of oxidative phosphorylation? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए thermogenin। Next question, which of the following is not true for oxidative phosphorylation? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इट यूजेस ऑक्सीजन एज एस इनिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ये ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है, इनिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटासोम्स आर फाउंड इन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is an important intermediate found in all the types of respiration? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, incomplete oxidation of glucose into pyruvic acid with several intermediate steps is known as। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, common enzyme in glycolysis and pentose phosphate pathways is। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the following is common to glycolysis as well as Krebs cycle in eukaryotes। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सब्सट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mutant cell lacking mitochondria will show। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए इनएबिलिटी टू ऑक्सीडाइज कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन देयर इज अ हाई rate of growth of yeast. After some time the rate decreases. Which of the following condition in the culture medium is least likely to have caused this? तो इसका आंसर है डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट डज नॉट टेक प्लेस व्हेन। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए NAD इज अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इन विच द सबस्ट्रेट is oxidized without
an external electron acceptor is? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्लाइकोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी पायरुविक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईएमपी कैन प्रोड्यूस अ टोटल ऑफ? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज बिफोर एंटरिंग क्रेब्स साइकिल पायरुवेट चेंज टू? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 36 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2 आर प्रोड्यूस outside mitochondria and 34 inside mitochondria. Next question, and product of aerobic respiration are? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी CO2 water and energy. Next question, amino acids are mostly synthesized from? इसका आंसर है अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, apparatus to measure rate of respiration and RQ is? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रेस्पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, when one glucose molecule is completely oxidized it changes? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी 38 ADP molecule into 38 ATP molecule. Next question, link between glycolysis Krebs cycle and oxidation of fatty acid or carbohydrate and fat metabolism is? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी एसिटाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज प्रोडक्शन ऑफ? इसका आंसर है ATP। फॉस्फोराइलेशन कहीं पे भी होगा तो मतलब ATP प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मिनल साइटोक्रोम ऑफ रेस्पिरेटरी चेन विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन टू ऑक्सीजन इज? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी साइटोक्रोम A3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट अ टेम्परेचर अबव 35 डिग्री सेल्सियस? तो इसका आंसर है, इसके चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्लाइन अर्लियर देन दैट ऑफ रेस्पिरेशन। इसका ऑप्शन नंबर बी है रेट ऑफ रेस्पिरेशन विल डिक्लाइन अर्लियर देन दैट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देयर इज नो फिक्स पैटर्न। ऑप्शन नंबर डी बोथ डिक्लाइन साइमल्टेनियसली। और तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एट अ टेम्परेचर अबव 35 डिग्री। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए रेट ऑफ photosynthesis will decline earlier than that of respiration. Next question, life without air would be? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी anaerobic. Next question, out of 38 ATP molecules produced per glucose, 32 ATP molecules are formed from NADH/FADH2 in? ऑप्शन नंबर ए respiratory chain. Next question, and product of citric acid Krebs cycle is? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी CO2 plus H2O. Next question, in animal cells the first stage of glucose breakdown is? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी glycolysis. Next question, respiratory substrate yielding maximum number of ATP molecule is? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ATP is injected in cyanide poisoning because it is? necessary for, ऑप्शन नंबर ए necessary for cellular function। ये राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट ऑफ ईस्ट आर?
इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, respiratory quotient RQ for fatty acid is। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Krebs cycle occurs in। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोराइलेशन टू फाइनली फॉर्म। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ATP। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मेंटेशन इज anaerobic प्रोडक्शन ऑफ। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और सिमिलर कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकेनिज्म ऑफ ATP फॉर्मेशन बोथ इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज एक्सप्लेन्ड बाय। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ मिटचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन Krebs cycle FAD participates as electron acceptor during the conversion of succinyl। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, succinyl acid to fumaric acid। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट गेन ऑफ ATP मॉलिक्यूल ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन इज। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 38 मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस बाई एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टू द टू नेम रिफर टू वन एंड द सेम थिंग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, ये दोनों चीज़ एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्राइओस फॉस्फेट इज द इलेक्ट्रॉन डोनर वाइल एसिटल्डिहाइड इज द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्लाइकोलिसिस ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड बाई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मीन्स G3P। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेज इन द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज आर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम ADP। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। आई थिंक ये दोनों ऑप्शन सेम है, वैसे इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ ATP synthesis in the chloroplast and mitochondria is based on। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रोटॉन ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ATP molecules could maximally be generated from one molecule of glucose if the complete oxidation of one molecule of glucose to CO2 and H2O yield 686 kcal and the useful chemical energy available in the high energy phosphate bond of one mole of ATP is 12 kcal। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 57। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओवरऑल गोल ऑफ glycolysis Krebs cycle and the electron transport chain is the formation of। ऑप्शन नंबर ए, ATP in small stepwise unit। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस ये लास्ट क्वेश्चन था, बाकी अब क्वेश्चन खत्म हो गए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।